Hey guys, welcome back to my channel. So today I'll tell you about a DIY easy feet scrub which you can prepare at home by using simple ingredients which are easily available at everyone's home. So I have added only 3 ingredients in this scrub. You can see it looks very beautiful and I have been using since very long, and I'll show you its result on my feet. So guys, who doesn't want beautiful feet? After all, beautiful feet also reflect beautiful personality, isn't it? But what happens with time and age in our busy life schedule? We see a lot of issues in our feet like uneven and dull skin tone, rough and cracked heels, dull skin, which fades the beauty of our feet. And then we start feeling bad wearing footwears which expose our crack heels, our uneven and dull skin tone, isn't it? It happens, guys. So don't worry about that, guys. Now with my DIY feet scrub, you can also get a soft, smooth feet like mine. Okay, let's get started then. सो गाइज़, आपको ऐसे जेंटली मसाज करना है इससे कम से कम 5 मिनट तक आपको मसाज करना है जेंटली, और अच्छी तरह से पूरे फीट पे, नेल्स पे, हील्स पे, हर जगह आपको ऐसे स्क्रब करना है। अगर आपको ये थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ा ऑयल और ऐड कर सकते हैं। सो गाइज़, ये स्क्रब उनके लिए बहुत ही अच्छा है जो कि रेगुलर आउटिंग करते हैं। धूप में बहुत ज़्यादा उनको रहना पड़ता है जिससे कि उनकी स्किन अनइवन होने लगती है, डार्क पड़ने लगती है, टैनिंग हो जाती है। या फिर जिनको बहुत ज़्यादा हील्स पहनने की आदत है, जैसे मुझे भी हील्स पहनना बहुत पसंद है। सो इससे क्या होता है, आपने देखा होगा आपकी हील्स थोड़े क्रैक होने लगते हैं या फिर आपका हील्स वाला बेस थोड़ा रफ़ होने लगता है, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है। सो मैंने दोनों फीट पे इसको अप्लाई कर लिया है गाइस। थोड़ा सा मैसे दिखता है ये, बट रिजल्ट वुड बी ऑसम। सो अब मैंने वॉश कर लिया है अपने पैर को ठंडे पानी से। इसको वाइप कर लें आप अच्छी तरह से। आप देख सकते हो मेरे पैर बहुत ही स्मूथ सी फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे। Look at my heels also, guys. It's so smooth. I can't stop touching my feet, guys. It's so smooth.
तो चलिए अब अगला स्टेप है हमारा मॉइस्चराइज़ करना। सो यहाँ पे गाइस मैं ले रही हूँ अपना अगेन DIY मॉइस्चराइज़र। इसमें मैंने रोज़ वाटर और ग्लिसरीन ऐड करके रखा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू, बट मैं पर्सनली ये वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका एंड रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। सो गाइस दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। आई होप यू लाइक इट गाइस। सो आपको ये स्क्रब ट्वाइस अ वीक यूज़ करना है और मिनिमम 2 वीक्स तक अगर आप यूज़ करोगे तो आपको इसका रिज़ल्ट दिखने लगेगा। So guys, go ahead and use the scrub, and if you like its result, then don't forget to like, share and subscribe my video. And that's all. So I'll see you guys in my next video now. Till then, take care of yourself. Thank you for watching guys. Bye.